Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I'm sure that all of you are fine and getting me. Okay, all right. So let's proceed further and try to cover up the remaining questions from the Victorian age, a complicated age, a complex age. So I'm sure that you have prepared all the questions that we have discussed so far, and you know a lot many details about this age. So अच्छा, इट इज रियली अमेजिंग टू सी कि आप सभी माशाल्लाह से बड़े पंक्चुअल हैं, आप टाइम पे ज्वाइन कर लेते हैं। सो ऑन ए लाइटर नोट, व्हाट इज द रीजन कि मैंने देखा है हमारे पास जो है मेजॉरिटी जो हमारी है वो शायद शायद 1-2 मिनट लेट हो जाए, वरना सभी स्टूडेंट्स हमारे जो है वो टाइम पे आ जाते हैं। सो इट मीन्स कि आप सभी बहुत अच्छे और बड़े पंक्चुअल हैं। इज इट सो? कभी भी आप लेट नहीं हुए? 6 PM से 6:02 तक आप सभी माशाल्लाह से आ जाते हैं। तो इट मीन्स कि आप जो हैं यू बीन वेटिंग फॉर द क्लास। अब सब अच्छे एस्पिरेंट्स हैं। तो ठीक है, थैंक यू उमा। बाकी अच्छे नहीं हैं। So the rest of the participants, they have not responded. So okay, all right, that's very good. अच्छा जी, we agree with. That's very good. Okay, thank you so much. So I'm sure there is much a way कि कमीशन जो है अभी बहुत तेजी से रिजल्ट्स जो है वो दे रहा है, और हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और अभी भी हैं कि ये जो है नहीं लेके जाना चाहिए था और नहीं जाना चाहिए अशूरा के बाद। लेकिन शायद जो है वो कमीशन अभी तक तो यही चांसेस हैं कि उन हॉलीडे से पहले पहले जो है वो यू वुड अंडरस्टैंड हाउ वी टेकिंग द क्लासेस। अच्छा, हम आपको अनम्यूट कर दें मिस उस्मा साहिबा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? No, sir. अच्छा, we received the message from the side. I just have scolded my daughter and let her get out of this room. Okay, the background She story, was you too know, the much making behind the noise. scene. Okay, so you are just exploring and unveiling behind the scenes, whatever is going on, whatever is there behind the story. Okay, but taking class, someone is there in the hospital, so I do respect all of you कि आप जो हैं इतने circumstances में भी you are taking classes. So I'm sure कि जो सारे के सारे results हैं वो आ जाने चाहिए, हमारी expectations हैं, और ये based हैं facts and figures जो अभी तक commission ने किया है. So the day is not away when the results will be there, and you know Park Studies and Political Science result has been announced today. So commission will definitely announce the result of English lecture within a week. That's our expectations. So, okay, ji, let's carry forward the story that we started yesterday. And if I'm not wrong, we were talking about Lord Alfred Tennyson. And remember one thing, whenever we talk about this person, how we can negate the very notion about Lord Alfred Tennyson that he is the representative of his age. Well, you should expect a lot many questions from the very person, Lord Alfred Tennyson, because yes, Lord Alfred Tennyson is considered that he is the representative, he is considered the representative of the age. So you need to justify this answer. You need to justify if you are going with this argument that he is the representative or not. So you need to justify the very comment. Remember one thing I kept on saying in my classes,
that you can take either side of the argument. You may say in subjective answer that 2 plus 2 is equal to 5. You may put your weight on any side, but your answers should not end in wilderness. They should not be blind alleys in your answers. So whatever position you are taking, you need to justify that position. So that is the first question. I will definitely answer this question as well. I will try to elucidate it further for your convenience. The second part of previous interview is, the first is, he is the representative. If the answer is yes, then second question emerges, that is why he is considered the representative of this age. Definitely, there have been a lot many names, there were a lot many writers, but it's not possible to name out a single person. So there, it means that there are some justified reasons and that we need to mention here. So participants, remember one thing I always say, and I kept on saying, and I would request once again, whenever you speak in your interview, you need to speak, you need to follow, you need to ramp up, you need to put your feet, you need to follow the lines of those people who are considered genius, are the giants in their particular field. I'm talking about W. Zedong. So whenever you are saying that 10 sign is the representative of this age, it is very wise to say 10 sign as per W.J. Long is considered the representative of the age. He is the literary man of Victorian era. That means you are showing, you are giving them two dimensions. The first one is you have read W.J. Long, and the second thing is that you know a lot of critics. Your knowledge is not just the surface knowledge. So whenever I'm answering the first part of the question, that he is the representative of the age or not, remember, just give me a minute. एक कप सिर्फ आज मुझे दे दीजिएगा, more than ठीक है, चलें मैं देखता हूँ इसे. Okay, so whenever we are saying that this person is the representative of the age, we need to remember, what do you mean by representation? जिन लोगों ने रिसर्च इससे पहले की हुई है, रिसर्च के अंदर जो है, रिसर्च में उन्हें एक चीज जो है वो पता चलती है, एंड दैट इज सैंपल. हमारे पास, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेजर्टेशन किया हुआ है, जिन्होंने थीसिस किया हुआ है अपने मास्टर्स में या एमफिल में? जस्ट राइट मी इन द चैट बॉक्स. आई जस्ट वांट टू नो, ताकि अगर किसी को ये नहीं पता होगा तो मैं इसे फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा. सो वी हैव अ लॉट मेनी पार्टिसिपेंट्स, आई एम श्योर. सो only one participant is there. Okay, so a lot many participants are there. Good. I'm sure that whenever you talk about sample, you know about the representative sample. Representative sample वो होता है जो पूरे के पूरे खानदान को डिपिक्ट करता है, जो पूरे के पूरे सैंपल को जो है वो जाहिर करता है. देखिए, अगर आप किसी शख्स से बात करते हैं, जब खाना बड़े बड़े शादी ब्याह के मौकों पे पकाया जाता है, पूरी देख खा के नहीं बताया जाता है कि खाना कैसे बना है. एक आधा दाना जो होता है या एक आध चम्मच ही काफी होता है ये बताने के लिए कि ये खानदान कैसा है, ये एज कैसी है. इसी तरह से हमारे पास, अगर हम क्रॉनिकल्स को देखें, अगर हम जो है वो हायरार्की को देखें, तो हमें ये समझ में आता है कि वो जो स्टोरी सबसे पहले हमारे पास चौसर से शुरू होती है कि उसकी एक एज है. फिर हमारे पास कुछ ही नाम ऐसे होते हैं जो कि टॉप के ऊपर आते चले जाते हैं, और बाकी जो है वो नाम आउटशाइन वो नहीं कर देते हैं दूसरे नाम से. सो इसी तरह से हमारे पास इस एज में जब ये आता है, तो टेंशन ने पूरी की पूरी सेंचुरी को कवर नहीं किया था. टेंशन ने कुछ
हाफ अ सेंचुरी को कवर किया था. तो हाफ अ सेंचुरी को कवर करने की डेफिनेटली कुछ रीजंस थी. अदरवाइज इसने तकरीबन जो है वो 60 साल से ज्यादा जिंदा रहा था. तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही पर्सन डोमिनेट करता हो. बट द थिंग इज दैट यू नीड टू मेंशन yes, Aruj, that's perfectly fine. Aruj's comment is very valid here. Okay, okay, I'm sure it's fine now, Mr. Erin. The second thing is the Victorian age was different than that of previous ages. I'm talking about an emotional nature. That is very valid comment, unemotional. In this age, we have a wonderful balance. And when we say balance, that means for the very first time, we have order and discipline. Discipline, discipline everywhere. The radicalism is not here. Radicalism, that was the part of the previous ages, that is no more here. The radicalism, like if you talk about P.B. Shelley, if you talk about all those enthusiastic, excited writers who were dominating their own age, they are no more here. So Lord Alfred Tennyson, who is giving you, who is representing the modest age. Lord Alfred Tennyson is that person who is giving you that here for revolution. Rather, we are here for evolution. So the journey that started from revolution, I'm talking about, अब इससे पहले देखो, new classical, they are talking about revolt. Romantics, French Revolution में revolt थी, वो भी revolt की बात करते हैं. And whenever I say every age is the reaction of previous age, जो action था वो पहले था और ये बाद में था. अब हम तो बात कर रहे हैं लॉर्ड अल्फ्रेड टेंसन की, लेकिन जो टेंसन की बात करते करते हम ये सेंचुरी को क्यों डिस्कस करते हैं? द रीजन इज the writers, they're not living in vacuum, they're part of the same society where you are living. So in case you are unable to understand the nature of your writers, you cannot move on, you cannot understand the society, the age. Lord Alfred Tennyson is that person that is giving you the balance, order, and respect. So that is the second question. The third question is about the political nature of this age. That is it true that in Victorian age we have rise of democracy? So rise of democracy, is it true? Well, the thing is that once again, because Lord Alfred Tennyson is the representative of this age, he is not a reactionary writer. So, if you're talking about the Victorian age, it is quite close to Middle Age, as we have a plethora of social conventions. And in this age, a gradual change was there from aristocracy to democracy. Things moved surely through steadily towards ultimate goals, and that the goal was democracy. So yes, if we read The Princes written by Lord Alfred Tennyson, if we read The Idylls of the Kings, then we can justify the very argument that yes, this age is talking about democracy. And not about democracy, you can also mention the struggle of the female one, the female suffrage, and education, and all the things that were related to female. So
Lord Alfred Einstein wrote in 1847 The Princess, and that is dealing with what? That is dealing with the contemporary issue of female education. And yes, this age mentioned and talked about religion, science, and Victorian compromise. By the way, do not ignore Victorian compromise. No one is going to ask you directly about Victorian compromise, but you need to understand you cannot ignore Victorian compromise. That is the third question. Talking about the fourth question. Meanwhile, we have Miss Uzma with us because after some time we are going to request her for the interview for the mock session. The second, the fourth question is about Matthew Arnold. Well, do not take Matthew Arnold this as a name, as an ordinary name. Matthew Arnold was a brand in itself. And yes, brand है भाई मैथ्यू आर्नल्ड जो है, he is the critic of the age. मैथ्यू आर्नल्ड को निकाल दो आप तो पीछे बचता क्या आपके पास में? मैथ्यू आर्नल्ड इज द पर्सन जो आपको चीजें सारी की सारी दिखा रहा है, और वो किस तरह से दिखाता है? ना सिर्फ ये पोइट्री लिख रहा है, but he is a prose writer as well. And he wrote on various topics, not merely a critic. So the very question was, the exact wordings of the question is, how you can justify that Matthew Arnold was a social critic? So how they are criticizing the Victorian society. So Matthew Arnold is pointing out whatever is there in the society. And this time we have the new definition of criticism. Do you know what was the definition of criticism that was given by Matthew Arnold? A very famous definition by Matthew Arnold. Do you know the definition? Anyone? Oh yes. Matthew Arnold for the very first time said, poetry is the criticism of life. So criticism as per Matthew Arnold is that इससे पहले तो पोइट्री रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ होती थी, जज्बात के इजहार का नाम हुआ करता था, but this time he's taking us in another world and he's trying to establish a link with that. So yes, Matthew Arnold gave you something new. And criticism को ये समझता है कि अगर उसमें से लाइफ को निकाल दो ना, ये अगर डेफिनेशन को ढंग से देखें, criticism of life, अगर लाइफ को निकाल दो, life is the main thing. So Arnold's criticism of literature, society, politics, and religion all tends to be a criticism of life. So you need to mention all these things about Matthew Arnold. Moreover, you need to understand the social criticism in Arnold's poetry. What social criticism is? Arnold said the very argument you will develop from the quotation of Matthew Arnold, the criticism of life. That is, most critics, they have their different views. They think that maybe life is the name of frivolous tourism. Maybe the life is the name of enjoyment. The T.S. Eliot has a different definition. Well, George Sainsbury has a different definition. But Arnold is dictating all the predecessors that no, it's not like that. You need to put life somewhere in the center. So when we say the social criticism,
it means he is giving you whatever was there, the actual criticism. He is not resigning from the circumstances. Because if criticism is negative, that is the reason he talks about Keats. That if Keats escapes from life, Ornell feels that he is bringing him back towards life. Because कीट्स की अगर हमने escapism को डिस्कस किया था, जो कि इससे पहले क्वेश्चंस का हिस्सा रहा है, ऑर्नल जो है उसको वापस लेके आता है, because without life you cannot enjoy anything. So you need to understand कि ये जो इसका सोशल क्रिटिक होना है वो सोसाइटी के साथ क्यों होना है, and that is ऑर्नल ने अपने काम के लिए इस पर बात की. ऑर्नल mentioned and a lot many references are there that are associating Arnold with science and faith. So that is about the fourth question of this page. The fifth and the last question of this age is pessimism in Victorian society. Okay, ji. So the fifth question is pessimism. What pessimism is? Yesterday, we were talking about pessimism and optimism in our session. Remember, pessimism in Victorian poetry ये इतनी फेमस है जितनी पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट ऊपर नीचे होना, ये इतनी फेमस है जितनी हमारा जो है वो आईएमएफ के पास जाना. ऑर्डर ऑफ द डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग, ये मशहूर लोग थे इस हवाले से. नोटिसेबल ट्रेंड था इनका पैसिमिज्म. क्या था? जो इनके बड़े बड़े नेम थे, उनका एटीट्यूड जो जिंदगी के मुतालिका था. देखिए मेरी बात याद रखिएगा, पैसिमिज्म तब आती है, समझ लीजिएगा इसको, अगर तो आप रेडिकल हैं, आप तमाम के तमाम हालात के सामने उठ खड़े हुए हैं, ठीक है, आपने तमाम के तमाम हालात को देखा, आप उनके सामने उठ खड़े हुए हैं और आपने ये कहा कि आप इनको एडमिट नहीं करते हो, आपने उसको रोमांटिक्स की तरह इग्नोर किया कि हम जो हैं, मैं इसको नहीं मानता, आपने जो भी चीजें कही हम इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं, हम तो इसको नहीं मानेंगे. लेकिन अगर आप उनको मान लेते हैं, अगर आप उन्हें मान लेते हैं, तो फिर तो आपके पास पैसिमिज्म रहेगी. I'm sure that whenever you talk about it's what I'm expecting, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो अपनी कन्वर्सेशन से, बट मेरा ख्याल है कि आप जो है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो विक्टोरियन एज में, तो आपको एक मैं पोएट जरूर रिकमेंड करूंगा. हबीब जालिब की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े रेडिकल पोएट थे. उनकी कुछ लाइनें हैं, मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो गयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता. तो जब आप मानते ही नहीं हो तब आप रेडिकल होते हो, तो फिर तो आपको कोई पैसिमिस्टिक नहीं होती है. विक्टोरियन एज में दो चीजों के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया. पहली चीज, इसलिए विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज बड़ा फेमस है, कि जो इससे पहले वाली एजेस थी उन सब ने पिछली एजेस के खिलाफ ठीक ठाक बगावत की, लेकिन इन्होंने कंप्रोमाइज किया. एंड दैट इज द रीजन, जब ये कंप्रोमाइज करते हैं, तो एक तो कंप्रोमाइज इनका इससे पहले वाले लिटरेचर के साथ था, तो दूसरा इनका कंप्रोमाइज साइंस के साथ था. साइंस एंड रिलीजन एंड फेथ के साथ, मजहब के साथ इनका जो है वो कंप्रोमाइज था. तो ठीक है, जो है आप जो बातें कह रहे हो वो भी ठीक है, ये जो कह रहा है वो भी ठीक है,
जब आप सभी की मानते चले जाते हो, इट मीन्स कि आपके पास कुछ अपना नैरेटिव नहीं है, तो फिर आप दूसरों के ही नैरेटिव के ऊपर चलते हो। सो विक्टोरियन पेसिमिज्म जो है, हमारे पास बहुत सी वजहों में से एक वजह तो ये है। दूसरे नंबर पे ये जो कंप्रोमाइज था, ये फेल कंप्रोमाइज था। वो कंप्रोमाइज ही क्या जो आपको डिस्पैरिटी की तरफ लेके जाए, जिससे डिस्पेयर है, जिससे मेलनकोली आपके अंदर हो। थॉमस हेनरी हक्सले की अगर आप बात कर लो, तो थॉमस हेनरी हक्सले बातें करता था, वो साइंस के जो है वो हाथ में नज़में पढ़ना शुरू हो गया था। मैकले की बातें आप करो, सो दे लॉट मेनी नेम्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो है वो अगर आप बात करो, एग्जांपल देखो, सो ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द डाउट्स। सो remember the very famous line, God is in his heaven, all's right with the world. So हमारे पास जो है, अब ये पता चलता है कि इनकी पोइट्री रूटलेस पोइट्री है। इनकी पोइट्री एक ऐसी पोइट्री है जिसके अंदर, जिसकी जड़ें कहीं नहीं है। ठीक है, so that is about pessimism. I'm sure that हमने इनको ढंग से डिस्कस किया, 5 के 5 क्वेश्चंस को। आज की एक पर्सनालिटी में आपको रिकमेंड करूंगा, इसको जरूर पढ़िएगा। एडवर्ड फिट्जजेरल्ड की बात कर रहा हूँ। एडवर्ड फिट्जजेरल्ड जो है, बड़ा फेमस जो है वो ट्रांसलेटर है। रुबायत उमर खयाम की जो है ट्रांसलेट इसने किया। बिकॉज आई एम ए रीडर ऑफ डेविड डिशेस, तो डेविड डिशेस ये कहता है कि ये पेसिमिज्म के ऊपर जितना काम इस केस में एडवर्ड फिट्जजेरल्ड का है, शायद ही किसी और ने किया हो। फिट्जजेरल्ड की जो पेसिमिज्म है ना, वो इनहेरेंट है। वो एक्सेप्ट करता है चीजों को, और वो दिखाता है पर्पसलेसनेस। वो बताता है कि ये जो एक्सेप्टेंस हमने की है, ये हमें किस तरह से, दिस एक्सेप्टेंस इज मेकिंग अस क्राई, सो इट इज halting the general way of life, so they're moving towards the maddening activities. His pessimism is of a different kind, so I would recommend you कि आप इसको जरूर पढ़िएगा। जो फर्टेलिटी है उसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा और भी राइटर हैं अगर आप पढ़ना चाहें। और लेटर हमारे पास विक्टोरियन पॉइंट्स में लाइक थॉमस हार्डे 1840 से 1928 तक रहा। जॉन डेविडसन था 1857 से 1905 तक। एडनस डॉसन है 1867 से 1900 तक। ए हाउसमैन है 1859 से 1936 तक गालिबन। सो दीज पीपल आर देयर। और जब हम पढ़ते हैं नॉवल ज्यूड द ऑब्स्क्योर पढ़ते हैं थॉमस हार्डे का, हमें पता चलता है कि हार्डे ने अपनी जिंदगी में ये आगाज में लिखा, बाकी जिंदगी में वो तो शायरी की तरफ चला गया। क्या वजह है कि वो वेसेक्स पोएम्स लिख रहा है 1898 में, जो उसने मजमूआ लिखा। सो अब क्या वजह है कि सारी की सारी चीजें, वो जिंदगी के जब इख्तिताम पे पहुंचता है थॉमस हार्डे, तो फिर किस तरह से वो यहाँ तक पहुंचता है। आई एम सॉरी, आई मिस द चैट ऑप्शन। वी हैव राइट द नेम्स प्लीज, एडवर्ड फिट्जजेरल्ड। आई विल ट्राई कि ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाए, मिस पांचबी एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट। एक्चुअली राइट इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि मैं अभी जो है अनएक्सपेक्टेडली हमारा जो बैकअप है पावर का, वो चला गया। एंड यू नो इट्स इम्पॉसिबल टू टाइप इन अ बिट डार्कनेस। तो अभी जनरेटर जो है उसके चलने की मुझे आवाज आ गई है, और शायद ऑफिस बॉय वाज टेकिंग सम टाइम। तो अभी जो है कुछ ही देर में आई विल बी एबल टू टाइप वंस अगेन, सो आई एम गोइंग टू टाइप इट फॉर योर कन्वीनियंस, वरना हम रिकॉर्डिंग उसकी शेयर करवा देंगे। ओके, सो यहाँ तक जो है चीजें आपके साथ जो है डिस्कस में करना चाह रहा था। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। आई एम श्योर कि आपको काफी चीजें जो हैं वो क्लियर हुई, आपको पता चला कि आप जो है वो किस किस तरह से इनको तैयार करोगे। ठीक है, और इनसे जो है वो देखने की कोशिश करोगे। कोई क्वेश्चन बाकी है, इफ यू फील दैट देयर इज समथिंग जो आपके जहन में है, यू मे गो ऑन एंड यू मे आस्क योर क्वेश्चन। अदरवाइज हम जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जो पार्टिसिपेंट है मिस उस्मा, उनके मॉक इंटरव्यू के लिए। Okay, all right. Thank you so much. If you want to take the screenshot, please go on.
Otherwise, let's talk about the next section, that is about the mock interview session. Well, Ms. Uzma, welcome to the session, and please do unmute yourself. So Ms. Uzma is with us. Yes, sir. Ms. Uzma, how are you? Alhamdulillah, sir. I'm fine. What about you? I'm good. Thank you so much. So, ready for your mock session, Ms. Uzma? Bit confused, but ready. Don't worry, confuse होने की कोई बात नहीं है. ये सभी आपके अपने ही fellows हैं. And I'm sure in your actual interview, आपके वहां पर भी जो interview panelists होंगे, वो आपके अपने ही होंगे. ठीक है? So, Okay, sir. आप जो हैं मुझे बताइए कि हम फिर without any delay शुरू करते हैं. So, starting from your degree, what is your last degree? What is the name of your last degree? Sir, I did masters in English linguistics and literature from Fatma Jinnah Women University. All right, masters in English. Why English? Why not any other degree like political science, like masters in Arabic maybe? Why not masters in Urdu? Why in English? Sir, actually, I did BSc in zoology, botany, chemistry. I wanted to take chemistry as my major subject, but my father did not allow me to go for co-education. I didn't want to quit my education. So Fatma Jinnah Women University was not offering degree for chemistry, but for English. And I developed some interest in speaking English, or to create some impact or impression on people by speaking English. So I just went for masters in English. What is the difference? You have used two words, impression and impact. What is the difference between impression and impact? Sir, impression. Sir, I want to skip this question. Okay, all right. I think when you are displaying your behavior, for example, I'm talking to you. So whatever is on my face, that is an impression. Okay. So impact is whatever I'm going to do. For example, if I am doing something in response of something, yes. Okay. Skipping this question. Talking about your hobbies. What are your hobbies, Ms. Uzma? Sir, actually, I am a working lady. I have been serving in the school education department as a secondary school educator. And when I get free, I used to cook food for my baby, and I play with my baby. So I don't find an extra more time to do any other activity. So you have used the word lady. What is the difference between lady and woman? Sir, lady is for all the people, I think. I think for all the girls, lady. And women is biological. I think we use this word to differentiate. Sir, I'm confused. Okay, no worries. Let's skip this question. Okay, you have mentioned you are SSE. What do you mean by SSE? Secondary school educator. Okay. So how many students do you have in your school? In my school, about 800. Is it a government primary school, middle school, or high school? It's high school. High school. Okay. Yes. So it's a high school. Well, talking about FTF and NSP. So do you know what do we mean when we say NSP and FTF? Sir, FTF is Farogh Taaleem Fund, and it is collected from the students
which is 20 rupees per student. NSB is non-salary budget, and it is given to the school by government, other than salary of the employees. And FTF and NSB both are spent on the students' welfare. Okay, so please you mentioned you are SSE and this school is owned by work under the policies of federal government or provincial government? Provincial government, School Education Department, Punjab. So, you know, what is the exact figure? How many children, how many students left their school in the COVID days? Because you're a teacher, so I'm sure that you have observed the difference. So how many children, how many students they left the school? Sir, about I think 75%. 75%, I think, not confirmed. On 6th of April, a report was published by the government of Punjab, and later on the same was reported by a distinguished newspaper, Dawn newspaper, mentioning all the details, number of out-of-school children in Punjab. So I'm sure that this report is about your department. So maybe you have heard anything about this report, that how many students in actual they are out of schools? No, sir. Okay, I'm listening right. this from you. Okay, you're listening from me. Then let me guide you that the out of school children, I'm talking about those children who were already attending their schools, but later on they left the school. 54% males and 46% female, they left their school. Okay, that makes in total 51,067 students. Okay, you know there. Okay. Thank you so much. How many total districts are there in Punjab? Sir, 36. 36 districts are there. Okay, yes, that's perfectly fine. And what is the name of your district? Rawalpindi. Why Rawalpindi and Islamabad, they're known as twin cities? They are known as twin cities. Sir, I have no idea. I didn't search for it. Okay, all right. What is the name of your favorite writer, Ms. Uzma? Sir, Ernest Hemingway. Very good. Hemingway is a very interesting factor. Have you watched any movie based on the work of Ernest Hemingway? Sir, I tried to watch a movie, but I couldn't complete. But I read his novels and few short stories. So what is the name of the novel that you have read? I'm talking about the novel with text. Was there any novel that you have completed? With text, I read A Farewell to Arm, The Sun Also Rises, and The Old Man and the Sea, and short stories, Cat in the Rain. The second one, Hills Like White Elephant, and Clean Well Lighted Place. The three short stories of Hemingway I read. You have read lots many novels. We're going to join this session again, Ms. Uzma, and we're going to start session once again from there. Okay? So join the session on the same link.